हे हाय मनिंदर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। काफी अच्छा लग रहा है। कॉलेज से हम बात कर रहे हैं पॉडकास्ट के ऊपर। Glad that we are doing this. So just to give you my background, like after passing out from NITI, worked for around 6.5 years in the industry with companies like Pidilite and Godfrey Phillips in supply chain and manufacturing, where I was managing digital transformation for entire supply chain and manufacturing, as well as handling critical plant operations at Pidilite. So this has been my journey, and lately, over the last 1.5 years, I've been working on my startup, जहाँ पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि how we can help large enterprises manage their frontline and blue collar workforce in a better and efficient way. Nice, nice. That's why we are here today. You're the right person to talk about it. Very critical topic. And I think this space needs more visibility because majority of the organization face challenges and whether it's about compliance, how to onboard people, and when it comes to talent and the skill set, it becomes very critical area to manage. So just to start with this, so if you can help us understand what are the different types of workforce, specifically in the supply chain domain, how they are categorized and how it works, so that we can understand the types in detail. Got it. So primarily, if we talk about supply chain, Mhm. we have manufacturing as one key vertical जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं वर्क करते Right. हैं. Then warehousing एक vertical है. Then logistics एक vertical है जहाँ पर लोग काम करते हैं ना. Right. So अगर हम वर्कफोर्स को कैटेगराइज करें तो एक होती है परमानेंट वर्कफोर्स जो Mm. कंपनी की खुद की वर्कफोर्स होती है, खुद के पेरोल पे होती है. Right. लार्ज एंटरप्राइज अपनी वर्कफोर्स बहुत जगह रखते हैं, बहुत जगह वो कॉन्ट्रैक्चुअल पे काम करते हैं. तो Okay. द सेकेंड टाइप इज द कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स विच Okay. which is nothing but you are outsourcing the workforce through a contractor. Like you are Right. not directly hiring the workforce on your own payroll, Right. but you have service providers who will help you get the desired contractual work depending on कि आपके पास कितना काम है. अब Right. वो फैक्ट्रीज में हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डेली बेसिस, डिपेंडिंग ऑन मंथली बेसिस, या Right. फिर कई बारी ये वर्कफोर्स वर्क करती है ऑन द आउटपुट बेसिस ऑल्सो. Okay. लाइक if I talk about logistics warehousing के अंदर, so you have loading unloading as a operation जो आपको करना होता है. वहां पे मेजरली वर्कफोर्स वर्क करती है कि कितने टन माल लोड किया, कितने टन माल अनलोड किया, या फिर Okay. कितने बॉक्सेस लोड करे, कितने बॉक्सेस अनलोड करे. सो Okay. मे बी मे नॉट बी दीज आर परमानेंट और थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल. और जो Okay. थर्ड टाइप होती है वो होती है गिग वर्कफोर्स, Hmm. जहां पर हम अभी देख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स है या फिर फूड डिलीवरी है. वहां पे जो ये वर्कफोर्स होती है ये इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड होती है थ्रू द कंपनी. दे आर Okay. ऑफर्ड कॉल एज पार्टनर्स, या वो डिलीवरी पार्टनर होते हैं या फिर वो ड्राइवर पार्टनर होते हैं जैसे उबर, ओला या बाकी और राइड शेयरिंग कंपनीज हैं. Okay. या फिर वो क्विक कॉमर्स में है तो वो आपके डिलीवरी पार्टनर्स हैं या उनके डार्क स्टोर्स पर हैं. सो दे वर्क ऑन अ टास्क बेसिस, लाइक उनको एक टास्क दिया गया है और वो एक टास्क के लिए काम करते हैं. Okay. अभी टॉक अबाउट सप्लाई चेन, गिग वर्कफोर्स ये हो सकती है या फिर आपकी वाइट कॉलर में भी गिग वर्कफोर्स हो सकती है जो कि Okay. एक टास्क से रिलेटेड आपके लिए काम कर रहे हैं, या फिर वो फ्रीलांसर्स हो सकते हैं. बट इफ वी प्राइमरीली टॉक अबाउट सप्लाई चेन, सो दीज आर द वर्कर्स इन क्विक Right. कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, जो एक टास्क बेसिस पे काम करते हैं विद द Okay. कंपनी. दिस हेल्प्स कंपनी कि जब उनके पास कम काम होता है तो वो कम वर्कफोर्स हायर करते हैं, ज्यादा काम होता है तो ज्यादा वर्कफोर्स हायर कर सकते हैं. सो इट हेल्प्स देम स्केल देयर ऑपरेशंस इन अ बेटर वे एंड दे डोंट हैव टू पे फिक्स्ड टर्म सैलरीज टू दीज वर्कर्स. ओके. ओके, सो परमानेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड गिग वर्कर्स, अगर मैं तो ऊपर ऊपर लेवल से देखूं, तो ये इज दिस स्पेस इवॉल्विंग ऑल्सो? क्योंकि अगर ट्रेडिशनल कंपनीज में देखें, जब स्टार्टअप्स और क्विक कॉमर्स और
स्मॉल स्मॉल कंपनीज जहाँ पर कंट्रैक्चुअल में काफ़ी काम हो रहा है, गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये नहीं था. तो maybe the companies were following permanent and contractual, and now with the addition of third category. So evolve कैसे हो रहा है स्पेस ये जनरली अभी? We are moving towards contractual gig वाला साइड, जहाँ फिर अभी भी model is still same but there is an addition. How it is happening currently? इफ वी सी दिस मनिंदर, लाइक ये ना दो स्टेप में इवॉल्व हुआ है. पहले स्टेप में क्या हुआ कि परमानेंट था. पहले बहुत सारी यूनियंस होती थी हर जगह पे, है ना, ट्रेड यूनियंस, फैक्ट्री यूनियंस. वहां से धीरे धीरे शिफ्ट हुआ कॉन्ट्रैक्चुअल पे, कि Okay, कंपनीज ने आउटसोर्स करना चालू किया काम को. उन्होंने कहा कि ठीक है, विल गिव इट टू स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स या बिग कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि उनकी ह्यूज वर्कफोर्स को मैनेज कर सकते हैं इन स्मॉलर पॉकेट्स. तो शिफ्ट आया परमानेंट से कॉन्ट्रैक्चुअल पे. okay, नाउ कॉन्ट्रैक्चुअल से गिग में शिफ्ट हो रहा है. कंपनीज कह रही okay, है कि यार हमें, हमारे पास कभी डिमांड ज्यादा होती है, कभी डिमांड कम होती है. तो इसको मैनेज करने के लिए हमें फिक्स सैलरीज ना देनी पड़े, या फिर वी कैन हायर ह्यूज वर्कफोर्स अक्रॉस इंडिया okay, without much contractors. Then they are moving towards this gig. And if you see, like it is expected ki right now the gig workforce is around 10 million in okay, India, and okay, 2030 तक they will cater to around 4.5% of the total workforce that is there in India. और अच्छा, इंडिया में लगभग आप देखोगे तो 150 to 200 million is the non-agriculture workforce right now, okay, which is all these categories. फ्रंट लाइन की बात कर रहे हैं हम ये लोग. दीज आर okay, द फ्रंट लाइन. इंडिया में उनको ब्लू कॉलर भी कहते हैं. okay. सो दिस इज दैट पर्टिकुलर वर्कफोर्स राइट नाउ. ओके, ओके. तो ये ब्लू कलर यू मेंशन, तो वाइट कॉलर इज बेसिकली व्हाट, लाइक द मैनेजरियल पोजीशन, लाइक द लीडरशिप और समथिंग, इफ वी कैन डिस्कस ऑन दैट पार्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग. कैसे राइट. कैटेगराइजेशन होता है ये वाइट एंड ब्लू? कंसीडर, राइट, कंसीडर दिस कि जिसके पास भी डेस्क है, ओके, राइट, वो आपका वाइट कॉलर. Like, ओके, or you can categorize those without desks as your blue collar or the frontline workers. अच्छा, ओके. I mean, this could be a simple way to वाइट, understand कि कौन ओके, कौन. इसमें ओके, ग्रे कॉलर भी होता है एक, लाइक वेयर अच्छा, हाउस के अंदर बहुत सारे लोग डेटा ऑपरेटर्स होंगे, बिलिंग कर अच्छा, रहे होंगे. ग्रे कॉलर हो जाता है कि अच्छा, दे आर at the front line but they have desks. But if you want to just categorize very easily, I mean, this is how I see it: those who have desks, those who don't have desks. okay, okay. No, no, it's totally understandable to, at least for someone who wants to understand the space, I think it's easier way to relate how you want to categorize them. So what I'm understanding is the movement is happening towards gig workers, considering the flexibility the industries are looking forward to. But at the same time, when it comes to workforce, hiring is a big challenge, right? So for a permanent workforce also, the desk people, whether they are managerial or they have some degrees or not, it was still a challenge which companies are trying to solve with time. Now we are talking about contractual and now the gig workers. So much flexibility, so much change happening. So like what kind of processes are being followed when the hiring happens? Like what companies do for these categories? I think we can talk more about contractual and gig here. Permanent, I think still people know what happens. Right. So let's first talk about the contractual hiring. Okay. So contractual hiring is through contractors. Like there are vendors who will Hmm. provide you this workforce. They will handle the hiring, Okay. right? I mean, you handles the selection, Okay. right? And they will handle the payroll and other compliance part of that particular worker. It is like in a factory, you need 1,000 workers to do, let's say, your daily operations. Hmm. Now, you can hire, let's say, five contractors who Hmm. will provide you under 200 workers for on Hmm. a daily basis for your this particular operations to run. And they Okay. will do the onboarding, they will manage their attendance. Okay. Obviously, along with you, you will have some systems through which you know that this worker has come for this number of days. At the end of the month, uh, the contractor will raise the invoice to you, you pay to the contractor, and then they will pay back to the employees. And then you as a principal will have
the compliance to see if the vendor has actually paid to the employees or not. Okay. So this is on the contractor side. You can hire one vendor, you can hire multiple vendors, Okay. depending on the location you are, depending on the work you want to do. So Okay. even in these contractors, there are two categories. One are organized vendors or organized third party like manpower suppliers, Mhm. or unorganized people Okay. also. Uh, there are very big suppliers also in India, which provide workforce in a, I mean, you want in any geography, you have multiple geographies, you can work with the same vendor and they'll provide you everywhere. And then there are in the smaller pockets, let's say you are in Haridwar region, you are in uh, Baddi region, they will have small contractors who are working in Okay. those particular regions only. They are majorly unorganized in a way, I would say. I mean, they do follow all the compliances and the law of the land, but maybe उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होगा कि वो इतनी बड़ी वर्कफोर्स को Okay. हैंडल कर सकते हैं. या if your demand increases, they might not be able to supply more demand to you. But yes, they are a huge part of this economy and they service a huge number of Okay. workforce, maybe more than 80% right now, Okay. uh, are supplied by the unorganized category. I could be completely wrong. वो उससे ज़्यादा भी हो सकती है. Okay. Okay. So this is contractual part. This is Contractual. the contract. Okay. Okay. Now, if we talk about the gig Hmm. part, so let's talk about some of the quick commerce companies, how they might be uh, hiring these folks. एक Okay. होता है इसमें direct hiring, like you can go to their portal, you can register as a delivery partner. Let's say I'm a delivery partner. Okay. ब्लिंकिट का एक, या जेप्टो का या स्विगी का, किसी का भी एक पोर्टल होगा, वहां पर जाकर आई कैन रजिस्टर माई सेल्फ एज अ डिलीवरी पार्टनर. And they'll have some processes where they will verify my credentials and then they will onboard me अगर उनके पास कोई requirement हुई तो. And Okay. this is how I can get recruited. नहीं तो the other way is, there are so many other startups which are just hiring, just working on giving bulk hiring to these companies who need gig workers. They have developed systems through which you can hire in bulk. Hmm. Let's say using WhatsApp also. So Okay. they are using those systems through which you can reach to this massive workforce and hire them on a bulk basis. Okay. Okay. इस दोनों के अंदर मैं ये सोच रहा था while you were explaining this, जो स्किल्स का असेसमेंट है वो तो बड़ा चैलेंजिंग पार्ट नहीं होगा. फर्स्ट वाले में कॉन्ट्रैक्चुअल में आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि कंपनीज मस्ट बी एबल टू डू समथिंग. इन द सेकंड गिग वर्कर्स पार्ट ये कैसे करते हैं स्किल असेसमेंट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज पीपल द वर्कफोर्स विल बी डूइंग समथिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. And if it includes some kind of skilled task, so how these contractors take care of that part and companies ensure this? And in case of gig workers, how do they, even though they are just delivery partner, but still safety, how to drive properly, like those things? Right. I think that is still a challenge Yeah. to assess the skills. But I mean, कुछ ना कुछ सिस्टम तो है उनके पास. Like onboard करने से पहले they must be having some questionnaires, या फिर कुछ क्विज होगा, कुछ असेसमेंट होगा जिसके थ्रू Okay. गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड किया, अच्छा हाँ इनका कितना ट्रेनिंग है उसके ऊपर. नहीं है तो they often provide some trainings to these workers Okay. through videos, और even onboarding के टाइम let's say 1 hour का इनका एक क्लासरूम ट्रेनिंग भी होता है, जहाँ पर दे अंडरस्टैंड कि अच्छा हाँ ये टास्क है, ये कैसे करना है. लाइक Okay. I know there's a fleet company who hires drivers. So they have a 1 hour session whenever they hire these drivers to tell them कि अच्छा आपको ऐप कैसे चलाना है, आपको Okay. कस्टमर से कैसे बात करना है, या फिर आपका हिसाब कैसे होगा. Okay. So you will see the attrition is very high. Okay. It ranges from 20% to 50% on a month basis. तो Yeah. आपकी 5 महीने में से लेके 2 महीने में पूरी वर्कफोर्स शिफ्ट हो सकती है.
हम्म। सो यू नीड रोबस्ट सिस्टम टू हायर दीज गिग वर्कर्स। ऐसा नहीं है कि आपने आज 1,000 हायर कर लिया, 15 दिन बाद नहीं हायर करना। इट ओके। हैज टू बी ऑन अ डेली बेसिस, लाइक आप डेली कुछ ना कुछ हायर कर रहे ही होंगे। राइट। तो हाई स्पीड हायरिंग और एट्रिशन रहता है इस पूरी वर्कफोर्स के अंदर। कॉन्ट्रैक्चुअल में आई वुड से कि मे नॉट बी दिस मच हाई, बट वहां पर भी आपको, बट दैट इज ऑन द वेंडर साइड। तो वो मैनेज करते हैं कि कितनी हम्म। वर्कफोर्स चाहिए। यू टिपिकली डोंट वरी अबाउट कि वो नए वर्कर्स कहाँ से लाएंगे या फिर कैसे हायर करेंगे। यू आर मोर फोकस्ड ऑन गिविंग योर रिक्वायरमेंट ओके। एंड असेसिंग देम। एंड लेट्स से आपको, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि मैन्युफैक्चरिंग में आपको 200 बंदे चाहिए, ओके। राइट? अब वो आते हैं, लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन कि उनका असेसमेंट कैसे होता है। सो हाँ। एट द टाइम ऑफ दे एंटरिंग द प्रीमाइसेस, कंपनीज हैव सिस्टम्स इन प्लेस। या तो उनको डिजिटल ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर उनको एक टीवी या कियोस्क पे एक ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर एक इन पर्सन ट्रेनिंग दी जाती है। सो देर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच दे आर गिवन ट्रेनिंग्स and assessed basically when they enter the premises. Okay. But this part is something where you also feel that there is a gap. It is not that advanced, which it could be. But I will touch base this point later. Maybe what the work you are doing currently, how you are trying to solve this problem. But I will touch base the management part which you mentioned. So in workforce management, either gig, contractual, or permanent, uh, how the ecosystem currently looks like not specifically related to the training or something. Like you mentioned that on regular basis the hiring happens, then the people leave early, then the new set of people will come into picture. तो अगर एंड टू एंड मैनेजमेंट देखें कि हायर किया, फिर उन्होंने थोड़ा काम किया, रिटेन करने की कोशिश हुई, वो चले गए, जनरली इंडस्ट्री वाइज ऐसे रिवॉल्व कैसे होता है? अगर मेरे को जनरली देखना होगी, सपोज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, जहाँ फिर जैसे फ्लीट का यू मेंशन, तो लॉजिस्टिक्स का हो गया, तो लॉजिस्टिक्स में ज़्यादा यू मेंशन कि होता है ऐसे। तो कुछ ऐसे इंडस्ट्री वाइज भी ट्रेंड है कि लोगों ने ज्वाइन किया, उनको मैनेज करते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा रुक जाते हैं, अदरवाइज उनका जो रोटेशन है वो इक्वली सेम ही रहता है हर जगह। कैसा है ये इंडस्ट्री में ट्रेंड? Okay, so I think what you are saying is absolutely right कि इंडस्ट्री वाइज अलग अलग तरीके से वर्क करता है। आई वुड से इंडस्ट्री वाइज एंड रीजन वाइज। लाइक ओके। इंडिया में अगर नॉर्थ में एक पॉकेट है, वहां पे बहुत अलग तरीके से वर्कफोर्स बिहेव करती है। इट इज ऑल अबाउट द वर्कफोर्स बिहेवियर। उनका ओके। सोशल स्टेटस क्या है, उनकी नीड क्या है, ओके। उनके पास और ऑप्शंस क्या है ओके। जाने के लिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स। एंड इंडस्ट्री प्लस जोग्राफी वाइज इज व्हाट वी आर सीइंग द ट्रेंड। ओके। ऑटोमोटिव में मे बी नॉर्थ में कोई पॉकेट है अगर, और जो साउथ में पॉकेट है, हम्म। वहां पर लोग बहुत डिफरेंटली बिहेव करेंगे। वहां पे ओके। एट्रिशंस बहुत अलग होंगे, उनकी नीड बहुत अलग होगी, कैसे आप उनको हायर करते हो, क्या उनका स्किल लेवल है, ओके। जहाँ तक कि उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, वो भी हम्म। बहुत डिफरेंट। अच्छा। एंड ओके। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, बट इफ यू विल सी, India has a very low productivity as compared to US or Istanbul, China, Vietnam, or Southeast Asia. And the productivity in India is typically very low, like less than 50%. If they are doing 80%, the productivity here is around 50%. ओके, मतलब अगर बाहर की वर्कफोर्स है, अगर वो किसी टास्क को कर रही है 80% एफर्ट के साथ, आर द जनरली द वर्कफोर्स इन इंडिया ऑन एन एवरेज हैज लाइक 50% का आउटकम इन द सेम टास्क, वेयर द वर्कफोर्स आउटसाइड इंडिया इन डिफरेंट regions might have 70-80% also. Right, right. I'll give you an example of textile industries, right? Yeah. So maybe वियतनाम में ऐसा है कि दो मशीन एक वर्कर चला रहे हैं, और इंडिया में एक मशीन पे ही दो वर्कर हैं। अच्छा। ओके, बट ये ऑटोमेशन वगैरह से भी लिंक्ड होगा ना, कि सिमिलर सेट ऑफ नहीं, मशीन से बट से। सिमिलर सेटअप है, सिमिलर सेटअप है, सब कुछ सिमिलर है। अच्छा। फिर कैसा है? तो
so you are saying that it's not only the workforce, like the region, maybe नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उस ज्योग्राफी का भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, मे बी इनहेरेंटली द नेचर ऑफ वर्कफोर्स, और मे बी ड्यू टू द फैक्टर्स दे आर अराउंड. फॉर एग्जाम्पल, I'm not generalizing, but for example, I know the workforce which comes from mountain wala area, bottom, they are very hardworking because उनका terrain ही ऐसा है, उनको शुरू से आदत होती है, तो वो दिख जाता है काम के अंदर. But I'm not generalizing it, but still I know that when people talk about workforce कि अगर इस geography से लोग आ रहे हैं तो उनका ऐसा आउटपुट रहता है, तो I think that is what you are saying, right? कि फैक्टर्स, जोग्राफिकल फैक्टर्स भी काफी इम्पैक्ट करते हैं. ट्रू ट्रू एंड ऑल्सो कि उनके पास और क्या ऑप्शन है. लेट्स से यू आर इन दिल्ली, है ना. ओके. आपके पास, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो या एक हम्म. लॉजिस्टिक्स में काम कर रहे हो. यू आर अर्निंग मिनिमम वेज विच इज अराउंड 13,000 टू 15,000 रुपीज के अराउंड ओके. ऑन अ मंथली बेसिस फॉर 8 hours शिफ्ट, 6 day वर्क, ओके. राइट. नाउ यू हैव दिस एज वन ऑप्शन, राइट. आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? यू हैव अ गिग. You can attach yourself in a quick commerce where हम्म. you can maybe, let's say, earn 20,000 rupees working, let's say, 8 hours only, but at your own will, राइट. right? अभी let's say कोई अगर हरिद्वार में बैठा है या हम्म. किसी और रिमोट टाउन में बैठा है जहां पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही है, उसके हम्म. पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है. द ओनली ऑप्शन ही और शी हैज इज कि यार मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मुझे सिर्फ यही करना है. हम्म. सो ओके. इट डिपेंड्स कि उस रीजन में और अपॉर्चुनिटीज क्या है उनके पास. राइट. एंड दीज आर सम ऑफ द रीसेंट ट्रेंड्स. मतलब गिग वाला, क्विक कॉमर्स, डिलीवरी, हम्म. कैब वाला, ये अभी अभी रीसेंट फिनोमेना हुए हैं. तो दिस ओके. इज डिसरप्टिंग द होल इकोसिस्टम एक्चुअली. ओके. लाइक लोगों के पास अब ऑप्शंस बढ़ रहे हैं. हम्म. ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, दे नो कि दे कैन चूज बेटर. तो राइट. एट्रिशंस बढ़ रहे हैं, right? And that's where they are shifting. And that's where, if you will see, everyone is trying to evolve and will evolve in the next 5 to 10 years in terms of how they manage their entire frontline blue collar workers. चाहे वो उनके खुद के हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, चाहे वो गिग है. And हम्म. that is where the need is कि how companies can better retain them, राइट. improve their productivity, राइट. right? Improve the राइट. quality, improve the customer service. करेक्ट. करेक्ट. ठीक है. सो इन द वर्कफोर्स मैनेजमेंट पार्ट, just taking from this productivity thing, so if we see the trend or how companies are trying to manage this part of productivity and in fact retaining the workforce, even if it's contractual, or I will not talk about gig workers here, so that is very short span. So are there any companies who have been able to, innovate something or find out ways to at least manage the productivity levels, and whatever they are paying, they are able to get better outcome? I don't know if some companies have done something in this line or something, some models or some way of doing this. Right, absolutely. So, Maninder, if you will see here, सबसे पहले is in India, how can we improve the skill level of the workforce? Hmm. Right now, skills could be different, like hard skills, soft skills, right? Hmm. And there's one company I can definitely talk about, Shahi Exports. They are into Okay. textile manufacturing. Okay. They they employ over 1 lakh plus manpower, right, across multiple factories. Okay. And they have actually proved that companies who invest in soft skill training of their workers see a 9% productivity uptick and a reduction in the attrition of the workers. And they have proved it with data, with randomized trials, with other third party companies coming into and proving that, hey, this works. Okay. So आई थिंक यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज आई है कि नाउ वी हैव डेटा बैक्ड रिजल्ट्स जो कहते हैं कि यार जब आप अपनी वर्कफोर्स को बढ़िया ट्रेनिंग देते हो, Hmm. राइट, चाहे वो आपकी है चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल है ना, यू आर पेइंग देम, यू वांट कि यार जो उनकी क्षमता है वो उतना तो करेगा, Right. राइट. एंड यू नो इंडिया के अंदर स्किल्ड वर्कफोर्स मिलना एक चैलेंज है.
Right. वर्कफोर्स मिलना चैलेंज नहीं है, वर्कफोर्स तो Right. मिल जाएगी, Right. स्किल्ड वर्कफोर्स मिलना चैलेंज है, Yes. राइट? दैट्स द चैलेंज इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ. एंड इफ यू से यार मैं एंटरप्राइज हूँ, मैं 20,000 50,000 या 10,000 लोग एम्प्लॉय करता हूँ, राइट? इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस स्किल्ड वर्कफोर्स, what you will do, you will say I will skill it myself. Hmm. कि हमें ही कुछ सिस्टम लगाना पड़ेगा जिससे Okay. एटलीस्ट हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बेस्ट मिले, राइट? Okay. एंड if you spend $1, Hmm. let's say, on these trainings and activities, you get a 2.5%, like $2.5 return. Okay. Okay. So this has been proved. Like, इट इज नॉट कि यार इनमें इन्वेस्ट करना इज अ वेस्ट, कि यार ये सिर्फ कंप्लायंस के लिए है या फिर ये चेक बॉक्स है, राइट? इट इज एक्चुअली शोइंग रिजल्ट्स ऑन द शॉप फ्लोर. Okay. Okay. खुद सोचो, मतलब वाइट कॉलर है, वाइट कॉलर को रोकने के लिए या फिर उनको सिखाने के लिए कंपनी स्पेंड अ लॉट. Hmm. Like you and me went through multiple trainings, first time manager training, induction programs, right? Then we are given health insurance, so many other things, so many other perks, right? Why do companies give? यार हमारी प्रोडक्टिविटी बेटर हो, हम ज्यादा देर तक रुके कंपनी के अंदर, हमारा मेंटल वेलबींग अच्छा हो, है ना? नाउ अभी तक इंडिया में सिंस द वेज लेवल इज वेरी लो, राइट, कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता था कि यार कोई आया या गया, दे वर जस्ट हायरिंग एंड फायरिंग. बट नाउ सिंस द वेज लेवल्स आर इंक्रीजिंग एंड दे विल एक्चुअली इंक्रीज इन अ मच हायर rate in the next 5 to 10 years, Okay. their need of retaining and training this workforce will become much, much higher. Hmm. Okay. Okay. सो दिस इज हाउ, एज यू वर सेइंग, कि वर्कफोर्स मैनेज करना कंपनीज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा एंड वो कैसे करेंगे. लाइक ऑनबोर्ड करने से लेकर उनको अर्न वेज एक्सेस देना, उनको उनके ग्रीवेंसेस सुनने का मौका देना, लाइक वेयर दे कैन अपने सजेशंस दे सकें, अपने फीडबैक्स दे सकें, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें. एंड all these things will eventually make a better workplace where they can have higher productivity, retain for better time, and if they are representing your brand in either in terms of the quality, Hmm. either in terms of the customer service, they are better equipped Hmm. and they know much much better कि वो आपका brand represent कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से. Right. Right. So this is how I feel the workforce management for the contractual workers is evolving and will evolve. Okay, okay. So white collar के लिए already lots of things are being done. So you are saying in the contractual as well, the the space is evolving in such a way that the wages will be increasing. So the companies will be highly focused on training, especially the soft skills you mentioned, so that they can retain people, they can improve their productivity, and it has been proven with the data-backed study you mentioned was Shahi Exports. So, but while you are saying this, this case can be applied to all the industries or majority of the industries because the nature of work is very different. So maybe something which has worked for Shahi Exports might not work for some other industry, or according to you, it's industry agnostic. Like it's at the end of the day, it's about the workforce. So if the skills can be improved, they are able to retain, productivities are higher. That means this can be done in all the industries. So like on which side you will be, your views will be here. तो एट द एंड ये सब लोग ह्यूमन है ना? वो ह्यूमंस की तरह ही सोचते हैं, चाहे वो एक ड्राइवर हो, चाहे वो एक फैक्ट्री टेक्सटाइल में काम कर रहा हो, चाहे केमिकल में काम कर रहा हो. ह्यूमन की नीड सेम है, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी. Okay. ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस की नीड चेंज हो जाती है ना? अल्टीमेटली हम सेम तरीके से ही बने हुए हैं, हमारी सेम नीड्स हैं. सो आई आई I mean, अगर prove नहीं हुआ है, that shows there is a huge potential, Mm. and the progressive companies are already adopting to it, right? We are currently working with some of the companies where we are trying to help their workforce improve on their skills, better training, better managing these workforce, right? Which is definitely showing improvement, and eventually this will go across industry.
to showcase कि यार there is an industry wide need to Hmm. uplift this particular workforce, uh, which will eventually help business. Like you are not doing any charity by supporting this workforce or doing things for this workforce. You will be doing it for your own business. Like it is your business risk. कल को आपको स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलती है, इट इज योर बिजनेस रिस्क, आपकी फैक्ट्री बंद होगा, आपकी वेयर हाउस कम होगी. सो कंपनीज आर रियलाइजिंग दिस, दैट दिस इज अ रिस्क फॉर द फ्यूचर एंड दे हैव टू मिटिगेट दोज रिस्क राइट नाउ. Okay. Okay. So risk and the management part. So when we have to combine both, so that means there is something which will come into picture is challenge. So you were just mentioning that you are also trying to solve some problems in this space. So can you share some challenges which are still there, which are even making things difficult for the companies to not get these things done on fast track basis, and how the space is evolving where you are also contributing and some other players are also trying to solve this problem. So what are these challenges? Why we are not able to solve this problem? Okay, so I think the challenges are huge. I mean, there are so many challenges. Let's talk about value chain wise, है ना? कि Okay. first is the hiring challenge. You want a skilled workforce, Hmm. uh, who can do the work that you want. So Okay. the first challenge is finding this workforce. Okay, how will you find this workforce which are in different pockets, right? Maybe in some tier two, tier three, but वहाँ पे अभी demand नहीं है. Hmm. Supply है वहाँ पे, demand नहीं है workforce की. So there is first gap is supply and demand. कि अभी काम कुछ pockets में होता है, but workforce और pockets में है, right? Okay. There we see कि labor या तो transition करती है या migrate होती है, फिर Hmm. वो डिफरेंट जगह पे आती है. सो दैट्स द फर्स्ट चैलेंज कि Hmm. माइग्रेंट लेबर आती है. नाउ द सेकंड चैलेंज इज हाउ टू फाइंड द स्किल्ड माइग्रेंट लेबर या skilled labor in that particular sector, on Okay. which I think government is also doing a lot of things. Skill India mission and other initiatives where government is also focusing a lot कि we Okay. want to upskill the workers in India, रीस्किल करना, अपस्किल करना, उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू जोड़ना, सो दैट दे गेट better at the job that they are doing, which ultimately helps the industries and the economy overall. Okay. So Okay. I think that is like finding the workers, getting them placed, getting them the right skills is a first big challenge. जहाँ पर अभी there are so many players who are trying to solve this. Uh, Finding the workers, matching them with the right job, and creating that ecosystem. Okay. देन आई थिंक द सेकेंड पार्ट इज जब ये वर्कफोर्स आपके पास आ जाती है, आपके इकोसिस्टम में आ जाती है, नाउ मैनेजिंग दिस वर्कफोर्स कि Hmm. यार दे हैव द करेक्ट नॉलेज टू डू अ टास्क, Hmm. they are better at it. How do you train them on your own processes? Nowadays, companies use some type of digital tools, app होगा या SCADA systems होंगे या warehouse management systems होंगे, some kind of technology, right? Now, companies want these workers to adopt on these technologies. Okay. वेरी बेसिक, या डेटा एंट्री हो तो वो अच्छे से हो, सही तरीके से हो. आप मशीन चला रहे हो तो यार वो मशीन सही तरीके से चलाओ, राइट? सेफ्टी को ढंग से फॉलो करो, एक्सीडेंट्स ना हो, राइट? व्हेन यू आर इन एटमॉस्फेयर, यू आर टॉकिंग टू अदर वर्कर्स, लड़ाई झगड़े ना हो वहां पे. प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करें या कैसे वो लोग काम करें, दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर कंपनीज. कि Okay. यार अब इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स है, Hmm. इनको कैसे ट्रेन करें अपने प्रोसेसेस के ऊपर. Okay. दिस इज अनदर चैलेंज विच कंपनीज फेस. ऑल्दो इसमें बहुत कुछ सॉल्व करने के लिए है कंपनीज के पास, लाइक फिजिकल ट्रेनिंग्स हैं, राइट? डोजो रूम्स हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स हैं, बट स्टिल दे स्ट्रगल कि यार इनको कैसे हम इतनी वाइड वर्कफोर्स को ट्रेन कर सकें एंड गिव देम अ स्टैंडर्ड ट्रेनिंग which is across the organization in multiple locations, सेम तरीके से मिला इनको. Hmm. So this is something that we are also helping कि यार आज की डेट में सब वर्कर के पास स्मार्टफोन है, Hmm. राइट? दे हैव स्मार्टफोन, दे हैव इंटरनेट, दे नो हाउ टू यूज व्हाट्सएप, एसएमएस. सो दिस इज वेयर वी आर हेल्पिंग. लाइक
कैसे कंपनीज उनको अपनी स्टैंडर्ड प्रोसेसेस और ट्रेनिंग्स बहुत इजीली डिलीवर कर सकती है, विदाउट एनी ऐप, विदाउट एनी लॉगिन, इन रीजनल लैंग्वेजेस जो उनको समझ आ सके। लाइक आज की डेट में सबका अटेंशन स्पैन कम है, राइट? आई हाँ। डोंट नो कोई ये पॉडकास्ट पूरा देख भी पाएगा या नहीं है। एवरीवन वांट्स यार 5 मिनट में बता दो यार कि क्या हो रहा है। तो भाई। वी आर सीइंग कि यार अटेंशन स्पैन तो सबका कम हो रहा है, तो कैसे उनको छोटी से उसमें बहुत ही कंसंट्रेटेड वे में कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बहुत इजीली बताया जा सके। सो हम्म। backed by science, how you can train these workers through technology in a much faster, better and efficient way. This is where we are working. ओके। Then the other part is कि यार इनका इटरेशन कैसे कम करें। लाइक ठीक है, बाकी सब हो गया, बट ये छोड़ के चले जाते हैं बहुत जल्दी, राइट? नाउ फॉर दैट देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस कि यार इनका इटरेशन होता है, राइट? कई बार उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है उस जगह पे, या उनको खाने की प्रॉब्लम होती है, कई बार अच्छी हाउसिंग नहीं मिलती है, कई बार दे डोंट हैव एक्सेस टू अर्न वेजेस। लाइक हम लोग को 30 डेज पे होता है तो चलता है, बट दे हैव सो मेनी अदर नीड्स कि यार उनको 30 डे के बाद, मतलब दे दे जस्ट वर्क ऑन देयर सैलरी, उनके पास सेविंग्स नहीं रहती है। सो उनको अगर 15 दिन पे सैलरी मिल जाती है, इट्स मच मच बेटर फॉर देम। नहीं तो वो लोन शार्क्स पे जाते हैं, लोन्स लेते हैं, विच आर 10% on a monthly basis, right? So these are some of the things which help employees or these workers to stay. और could be यार कि आपके वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है उन वर्कर के लिए, आप उनसे 1010 काम तो नहीं करवा रहे हो, आप उनसे रिस्की काम तो नहीं कराते हो। वो कहेंगे यार ये छोड़ो, ये तो बेकार है, साथ वाली फैक्ट्री में चलते हैं, 500 रुपये कम भी दे रहा है, बट वहाँ काम साफ सुथरा है। राइट। ओके। So the other major thing is this iteration, like how to handle this iteration in the entire workforce. And now, since technology के through they have other options which they can find very easily, it is becoming more challenging. तो अभी उनको compete करना पड़ेगा factories को भी, या different workplaces को भी, so that they can retain this workforce with them. एंड आई टेल यू, अगर आप रिटेन नहीं करते हो, आपका खर्चा जो ट्रेनिंग पे होता है, फाइंडिंग पे होता है, ऑन बोर्डिंग पे होता है, यू हैव टू स्पेंड इट अगेन। राइट। हम्म। तो इट्स अ कॉस्ट, मतलब इट इज नॉट कि आपको करना है फॉर एनीथिंग एल्स, इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट टू यू। अगर आपने उनको रिटेन नहीं किया, इट इज अ लॉस टू यू इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी। क्योंकि ये तो है नहीं कि नया बंदा आया वो पहले दिन में 100% पे हो जाएगा। आपने किसी को 6 महीने ट्रेन किया, वो आपके यहाँ पे 80-90% प्रोडक्टिविटी पे आया, वो काम कर रहा था अच्छा, अब वो एकदम से सडनली छोड़ के चला गया बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजन। You have to start again on the zero and again spend on hiring, training, onboarding, and then bringing that person to the same productivity level. राइट। हम्म। So, like these are some of the HR things like training, onboarding, or yes, but in contractual or frontline workers, this is more operation focused. Like it is not just the HR thing; it is a HR operations thing. Like these things directly impact your operations. हम्म। So हम वाइट कॉलर में बहुत अलग तरीके से देखते हैं इसको, राइट? बट वहां पर भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लाइक एचआर इज बिकमिंग अ बिजनेस यूनिट नाउ, राइट? कि वो बिजनेस को इम्पैक्ट करता है पूरा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक एचआर है, उनका काम ये है और ये करना, बट यहाँ पर तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके ऑपरेशंस को। अगर आज 100 बंदे की रिक्वायरमेंट थी, 50 ही आए हैं, you will be producing 50% less. That's a direct impact on your like availability of राइट। the material, on your sales, सब कुछ impact होगा। राइट। राइट। हम्म। एक्चुअली तो ये तीन तीन सब सेक्शंस हो गए अगली चैलेंज के ना। और पूरा साइकिल हो गया, लाइक व्हाट यू राइटली मेंशन, द वैल्यू चेन वाइज पकड़ते हैं। तो अभी, सो वन ऑफ द थिंग्स विच यू मेंशनड इज यूजिंग द टेक्नोलॉजी विच यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू यूज एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस, कि कैसे ऐसे व्हाट्सएप जैसा मीडियम हो गया या फिर और मीडियम हो गया, और विदाउट एनी डिफिकल्ट लॉग इन और समथिंग दे कैन डायरेक्टली गेट द। तो इसमें ये वाला पार्ट जिसमें डेटा इन्वॉल्व है, और फिर देन यू मेंशन अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट अबाउट एक्सप्लॉयटेशन ऑल्सो, इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन, हजार्ड वाले एरिया में काम करवाया जा रहा है, अच्छी कंडीशंस नहीं दी जा रही,
रहने को या बैठने को या खाने को। तो जो कंप्लाइंस का एंगल है, इज इट इजियर टू डू दीज थिंग्स, या फिर व्हेन आई से इजियर आई विल रीफ्रेज माय क्वेश्चन, कि मतलब कंप्लायंस ऐसा है क्या कि जिसको यूज करके समझा जा रहा है इजीली और उसको फॉलो करना भी इजी है, या फिर कंप्लायंस को इतना कॉम्प्लेक्स बना के रखा है स्पेस में कि आधी चीजें समझ नहीं आती, आधी चीजें समझ आ रही हैं तो प्रॉपरली हो नहीं पा रही। सो कंप्लायंस इज साइड में डेटा साइड व्हाट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। आई एम श्योर यू मस्ट बी going through certain compliance requirements also, because you are helping the companies on the onboarding के बाद मैनेजमेंट वाला पार्ट एज वेल, और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसको, तो ये कंप्लायंस कैसे वर्क करता है इनके अंदर, ये विच मेक्स दीज चैलेंजेस प्लस प्लस, राइट, इन द डिग्री। तो पहले तो समझते हैं कंप्लायंस है क्या, है ना। हाँ। कंप्लायंस इज समथिंग जो आपके बिजनेस को रिस्क फ्री बनाता है। हाँ। लाइक आपको रिस्क, बिजनेस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपको कंप्लायंसेस करने हैं, राइट। नाउ डोंट, मतलब हम उनको अगर एक चेक बॉक्स की तरह देखेंगे तो वो हमेशा डिफिकल्टी दिखेंगे हमें। बट हम्म। अगर हम उनको देखें कि यार वो कैसे हमारे बिजनेस रिस्क को रिमूव करता है, हम्म। राइट, देन दे बिकम सो हेल्पफुल टू यू एज अ इंडस्ट्री, एज अ कंपनी, कि यू विल से कि यार मतलब हमें ये फॉलो करना ही चाहिए। मतलब आई विल गिव यू एक सिंपल एग्जांपल कि यार कंपनीज सेक्सुअल हरासमेंट, पीओएसएच है ना, पॉश है, हम्म। राइट, उसका कंप्लायंस क्यों फॉलो करती है। मतलब ऐसा तो नहीं है चेक बॉक्स की तरह अगर कोई करेगा तो यार बस चेक बॉक्स की तरह हो गया। बट इफ देयर आर विमेन इन योर कंपनी, राइट, फर्स्टली इट शोज, इफ यू आर फॉलोइंग दिस, फॉलोइंग मीन्स यू आर गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज कि यार सेक्सुअल हरासमेंट है क्या। यू हम्म। आर टेलिंग देम कि यार हाउ टू टॉक टू विमेन, राइट, हाउ टू बिहेव विद देम एंड ऑल अदर स्टफ इन अ वर्किंग एनवायरमेंट। एक तो you are creating a safe space for women to work in your company, right? And let's say you have a rock star women performer, and there is some case of like posh that happens because you have not complied, you have not given trainings, you have not created processes कि यार वो address हो सके, she will leave. It हम्म। is ultimately affecting your business. And if you are not having women or creating space for women, you are missing on the talent जो आपको मिल सकता था बट नहीं मिलेगा। राइट। कंप्लायंस को अगर आप चेक बॉक्स की तरह देखोगे तो वो हमेशा डिफिकल्ट है, बट इफ यू विल सी कि यार वो कैसे बिजनेस को हेल्प करेगा, यू विल से कि यार ये तो करना ही है। मतलब डिफिकल्ट तो क्या ही है, मतलब बिजनेस आर बिल्ट ऑन डूइंग डिफिकल्ट थिंग्स, राइट। राइट। सो इन द कोर्स, सेम वे, I mean, I'll say companies who are focused on doing this right will राइट। survive for, like ओके। ESG is becoming very important for companies, right? If you are a company who is exporting to outside India, you have a customer in US and Europe, they will not buy from you. Like I know you come from procurement background, right? You want to buy from a supplier who is reliable, हम्म। राइट, जिसका बिजनेस चलेगा, धंधा चलेगा भाई, बंद नहीं होगा। अभी कोई अपने वर्कर्स के साथ ही माल प्रैक्टिस कर रहा है, उनको प्रॉपर वेज नहीं दे रहा है, कल को गवर्नमेंट आके उस पर छापा मारेगा तो वो बंद हो जाएगी। राइट। राइट। हमारा एक सप्लायर था जो 50% तुम्हें एक चीज सप्लाई करता था, यू आर डन। मतलब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ से फुलफिल करोगे 50%। दैट्स वेयर एज अ सप्लायर यू वांट कि यार, एज अ बायर यू वांट योर सप्लायर्स आर following these norms, and following these norms means complying for what, business risk को mitigate करने के लिए। So ओके। compliance is all along related to having, mitigating the business risks. ओके। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को पूछना है हर्षित, इसी से रिलेटेड बट मोर अबाउट, कि अभी करंट जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट स्टिल लॉट्स ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस आर doing this onboarding, then how the training should be done manually. So, what do you think? Why it is still not going digital, and what are the hurdles, especially these large organizations are facing, or is this more of a mindset thing? So I think the space is evolving. Okay. Like companies are realizing कि अब तो हमें करना ही है, like what gets measured gets corrected,
है ना। Yeah. सो अभी डेटा नहीं था उनके पास, चल रहा था तो चल रहा था। बट नाउ विद एवरीथिंग टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग एट अ मच हायर पेस, एआई आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, कंपनीज कांट सेट कि यार ठीक है ये प्रोसेस ऐसे ही चल रहा था चलेगा। वो फिर नहीं तो वो कोडक बन जाएगी। Yes. मतलब है ना, कोडक के साथ नोकिया के साथ जो हुआ वही होगा उनके साथ भी। सो दे हैव टू इवॉल्व एंड दे आर रियलाइजिंग यार वी हैव टू गो डिजिटल इवन विद दिस वर्कफोर्स, चाहे वो उनका ट्रेनिंग है, चाहे वो उनका Okay. ऑनबोर्डिंग है, वो उनका Okay. पेरोल है, कंप्लायंस है, इवन द checklists and the task management is becoming online, right? Okay. Because it gives them the power to manage this entire workforce in a Mm. much better way, like Okay. faster, better and efficient. like आज भी वो कर रहे होंगे वो चीज, Mm. उनकी कॉस्ट आ रही है, राइट? व्हेन दे अडॉप्ट टेक्नोलॉजी देयर कॉस्ट विल गो डाउन, चाहे वो बिजनेस रिस्क में कम होगी, चाहे वो मैनेजमेंट में कम होगी, Mm. चाहे वो एट्रिशन ड्रॉप होगा, बट अल्टीमेटली आरओआई है। लाइक Mm. अब वो किसी को बताना नहीं पड़ता कि यार टेक्नोलॉजी लगाने से तुम्हें फायदा होगा या नहीं होगा, राइट? मे बी 10 years बैक पीपल वर स्टिल थिंकिंग कि यार ये पेपर पे सही तो चल रहा है, क्यों इसको डिजिटल करना। बट वो पेपर पे कुछ एनालिसिस ही नहीं कर सकते थे, लाइक दे डोंट हैव द डेटा जहां Mm. पर वो जाके कुछ देख सकें। अभी डेटा ही इतना ह्यूज है कि आप पेपर कब तक कलेक्ट करते रहोगे, लाइक कैसे उनका एनालिसिस करोगे। सो आई थिंक कंपनीज हैव रियलाइज दिस दैट वी हैव टू अडॉप्ट डिजिटल। इट्स जस्ट दैट कि सबसे पहले वाली जो कंपनीज होगी वो थोड़ी ज्यादा प्रोग्रेसिव होंगी, है ना, विच Okay. सीज हाँ यार हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, दे Mm. विल अडॉप्ट फर्स्ट। देन उनको देख के उसी सेक्टर में और कंपनीज अडॉप्ट करेगी। Mm. देन देयर विल बी सम सेक्टर्स जो बिल्कुल लास्ट अडॉप्टर्स होंगे। सो आई थिंक दिस इज अ ट्रेंड विच विल फॉलो। एआई में भी यू विल सी कि कुछ लोग बहुत जल्दी यूज करना चालू कर गए हैं, है Yeah. ना। कुछ लोग हैं अभी भी कंपनी में होंगे जो कह रहे होंगे यार छोड़ो एआई को बाद में देखेंगे। सो Right. every company follow this, like there'll be someone who will be disruptor, who will join first, then followers and then laggards. Okay. So we're focusing on the innovators who are looking to, transform their frontline workforce through technology. These are the companies whom we want to work with, Right. who can trust us and say, "कि यार ठीक है, let's do this. Let's see how you transform us, our supply chains, our value chains, and help us." And then slowly will these companies will follow us when once we showcase and कि यार ठीक है, इससे देखो कितना impact आता है। Nice. Nice. And thanks a lot for sharing your ideas today. Yeah. No, thanks, Maninder, for having me. I think we want to actually help enterprises solve their frontline blue collar workforce management challenges. And through you, I think we'll be able to tell a lot more people that how we can do it and what we can bring on table for them to managing this workforce. I think this was super exciting, super happy to chat with you after a long time and discuss on the topic that we are really passionate about. So me and Ankur, I think we are really passionate about how we can solve for India in India using technology for this particular workforce. No, no, nice. Thank you. Thanks, Harshit. Best wishes to you and Ankur both. Yeah, yeah. Thanks a lot, Maninder.